एक ऐसा होता है कि मुझे ना स्टॉक मार्केट करना है, सो यू डोंट रियली नो व्हाट यू वांट टू डू देयर, बट इट्स लाइक मुझे स्टॉक मार्केट करना है। ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं, 16-17 साल के बच्चे होते हैं जिनका डीएम आता है कि भाई मुझे ना भैया स्टॉक मार्केट करना है, तो मैं क्या करूँ? आई एम लाइक, so it's there's so much you can do there, right? Like so much. Ladies and gentlemen, today in the Goela House of Finance, we have Aditya Iyengar. Instagram mein he is known as Lord Money Iyengar. I'm sure you must have seen his content. He's only 21. He is prepping for a CFA Level 2 exam, with which he's making fantastic content on finance, actual intellectual content on finance. I have him here. आज हम जानेंगे what's Aditya's mindset, how he manages to do this, all of this at the age of 21. What is valuation, how to do valuation. We've talked about intrinsic value, we've talked about the current markets, we've talked about a lot of things. तो आपको पता है यार, हेडफोन्स लगाओ, आराम से बैठो, मैं शुरू कर रहा हूँ. Okay, so Aditya, thank you so much for coming in the Yeah, man. Thank you for having me. It's a pleasure to have you here. आज बहुत मजा आने वाला है. Yes, let's go. So Aditya, मतलब आजकल क्या चल रहा है? I just know you've just come back from the gym, थोड़ा weight gain कर रहे हो, तो आजकल what is happening these days? What are you excited for these days? So honestly, I have the only thing I'm kind of like looking forward to now is like I just registered for my level 2 CFA level 2 and that's in November. So अब मेरे को उसका चालू करना है पढ़ाई, तो अब वो धीरे धीरे उसका आएगा, प्रेशर शुरू होगा. एंड कंटेंट तो यार चालू ही है. I create every day. I make it a point to post one reel every single day. So that's there. And other than that, it's like probably what I'm looking forward to the most is working out. Like, मतलब I'm assuming क्या आपने ऐसा आंसर एक्सपेक्ट किया होगा, something about the stock market or anything, but it's like I barely check my portfolio. I'm not that active there. I don't trade. Sign of a good investor. Either the way a good investor, that investor forgets his trading account password. So by that logic, you're on point, my friend. I know, right? Like, and it's like abhi ye last, the only time I checked a little bit is during this whole Russia war ka crash. Russia. So this Russia war ke time pe I was a little like, मतलब वो कैसा होता है ना, आप एक अभी समझो आपने एक स्टॉक देखा और आपने सोचा कि मेरे को ये खरीदना है, और आप पूरी पढ़ाई करते हो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो, मार्केट देखते हो कैसा है, सोचते हो कि चलो मार्केट शेयर है, वैल्यूएशन अच्छी है, प्राइस अच्छी है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, लेते हैं. बट सीन ऐसा होता है कि जब निफ्टी एकदम मस्त अच्छा चल रहा है, बुल रन है, तब लगता है हाँ, इसलिए यू फील कॉन्फिडेंट बाइंग इट. बट द टाइम व्हेन द स्टफ इज गोइंग डाउन, वो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. सो दिस वाज व्हेन आई चेक्ड एंड आई वाज लाइक, I had some cash, so like this is a good time to invest. But then वो थोड़ा confidence था. But फिर भी this was the only time I actually opened that account to buy some stocks and then forgot about it again. So I barely look forward to things in the stock market. Bro, like, honestly speaking now, this is actually answer which I genuinely like. क्यों मैं आपको बताता हूँ? Yeah. Because the fact is कि if somebody is just like कि on work, तो it shows कि उसका थोड़ा scope limited है. So I love it when people say कि मैं तो ये देख रहा हूँ, I'm completely out of the thing. हाँ. तो बढ़िया. अच्छा, I'm going to talk about your portfolio also. We're going to talk about your content creation journey also, जैसे लोगों को help मिले. ठीक है? अब एक चीज आती है. I think now you're 21, right? You told me just 21 by the way. ठीक है? You making fantastic content on the internet, which I'm sure जिसको obviously यार उसके लिए research करना बनता है. ठीक है? उस content जो आप बना रहे हो, research is there. फिर you're also sitting for your CFA level 2 November में. So how do you manage all these things? और stock markets में interest कहाँ से? Okay, so stock market में interest आया because of like eliminating things. मतलब जब मैंने 12th खत्म, मतलब 10th खत्म किया, तो मेरा था कि मुझे साइंस नहीं लेना because it's a rat race. It's like या तो you do CET and then NEET exams, or I don't want to give an exam in this environment. And so it's like that was out of question. I wasn't a fan of accounting, so I was like, I gave up commerce. Yeah. They were like, do whatever you want. Like my parents had one logic कि तुम्हें एडमिशन जहाँ मिल सकता है उतने मार्क्स लाओ, वहां एडमिशन लो, जो करना है करो. They were like, हम डोनेशन भरने नहीं आएंगे. तुमको अगर 95% वाले कॉलेज में मार्क्स चाहिए तो 95% के हिसाब से पढ़ाई करना, 60% में एडमिशन जो तो उस हिसाब से पढ़ाई करना. So this was their approach. And how are you as a student, just to get an idea? I've been like a little above average as a student. Like I have in 10th I had around like 91% or something, and 12th I don't recall it. It was somewhere around 85. 12th again doesn't matter as such, but in college throughout I've had 9 GPA.
और अब CFA level 1 I did 90 percentile, like above average I would say. Then what happened is I was like वो सब करके मैंने फिर आर्ट्स में एडमिशन लिया because I was like मुझे पता है मुझे क्या नहीं करना, तो ये कर लेते हैं ऐसा. And then I did a degree in economics and I was like, oh, now I I really don't believe that I there is a real career in economics. I mean, I don't think you can make something meaningful there. मतलब अगर ये राकेश झुंझुनवाला ने कहीं बोला था, while I don't agree with a lot of things he says, one thing he said was, if economists had the solution to the problem of the world, तो वो टॉक्स नहीं दे रहे होते ना, वो प्रॉब्लम्स हो जाते सॉल्व अब तक. सो आई वाज लाइक, सो मैं इकोनॉमिक्स में तो नहीं कर सकता करियर, तो व्हाट्स द क्लोजेस्ट फील्ड, लाइक ओके फाइनेंस इज समथिंग आई कुड डू दैट. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. सो मैं जब आई थिंक सेकेंड ईयर में था तब मैंने फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट की. एंड देन व्हाट हैपेंड when it came to content, and then after my degree I was like, okay, now should I do a master's or should I do something else. तो उस टाइम पे कोविड का माहौल था पूरा, और मैंने अप्लाई भी करा था यूनिवर्सिटीज. मैंने अप्लाई टू यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, एंड ऑल आई गॉट इनटू ऑल थ्री. एंड व्हाट हैपेंड, आई गॉट दोस एक्सेप्टेंस लेटर्स एंड आई वाज लाइक, ओके क्या बोलूं अब इनको. लेकिन तब कोविड का टाइम था, सब ऑनलाइन हो रहा था, सो पीपल वर लाइक, इट मेड नो सेंस. हाँ, इट मेड नो सेंस. मतलब अब मैं अपने पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि मेरा एजुकेशन फंड करो, वो अपने सेविंग से इतने पैसे डालेंगे और फिर मैं वहां जाकर ऑनलाइन पढ़ाई करूंगा. इट डिडंट मेक सेंस. और फिर तब क्या हुआ, आई डिस्कवर्ड CFA एंड आई वाज लाइक, इसकी तो पढ़ाई खुद करनी होती है. एंड नाउ हियर इट्स लाइक, ओके द कॉस्ट इज वे लोअर, बट इट्स लाइक इफ यू पास द एग्जाम देन इट मेक्स सेंस. सो आई वाज लाइक, ओके देन आई एम गोना डू दिस एंड इट्स मेक इट, लाइक मेरे को करना ही है पास, मेरे को वो सोचना नहीं है री अटेम्प्ट का, वो करना ही है मतलब कुछ भी करके. फिर आई रजिस्टर्ड फॉर CFA level 1 एंड आई स्टार्ट स्टडीइंग. एंड ऑनेस्टली ना, मेरे को सच्ची ऐसा वो बोलते हैं ना कि if you want to like pass an exam, सिर्फ दिन भर पढ़ाई करनी है, ये I really don't believe in that यार. Like if you like something then you will figure out how to do it regardless. तो अगर आपने सोच लिया कि आपको एग्जाम पास करनी है और आपने सोचा आपको कंटेंट बनाना है, दोनों चीज आपको पसंद है, आप कर लोगे कुछ ना कुछ करके. सो ऐसा मैनेज करने का कोई ये नहीं था. एंड पेरेंट्स आर सुपर सपोर्टिव, दे आर लाइक यू नो, वहां कोई ऐसा ये नहीं है कि प्रेशर नहीं है दैट do specifically do this, look for stability, or do a job with that content creation. They were like कि देखो तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस करो, कंटेंट क्रिएशन भी करना, एंड जॉब का पढ़ाई होने के बाद देख लेना, लेकिन अब दोनों चीज ध्यान से मन लगा के करना. सो I think that is like a huge factor, because I don't know how this content thing would have played out if my parents weren't supportive. Thankfully they are, and I had started making content long back with my dad. I was making just generic content. That's when मेरे को लगा कि अब उस टाइम पे कैसा था, मैं इंटर्नशिप कर रहा था एक जगह जहाँ पे मैं आर्टिकल्स लिख कर देता था. मैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को रिव्यू करता था और उसके आर्टिकल्स लिख के देता था, और उस पे मुझे एक आर्टिकल लिखने के 300 रुपए मिलते थे. तो वो 300 रुपए मैं इन्वेस्ट कर देता था. मतलब क्या होता था, वो 300 अक्यूमुलेट होकर जब 5,000 होते थे वो बंदा मुझे भेजता था, तो मैं वो इन्वेस्ट करता था. तो उस टाइम पे मैंने देखा कि मेरे जो दोस्त है वो भी सिमिलर चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो 5,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो 5,000 रुपए से जूते ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, विच आई फेल्ट वाज अ लिटिल रॉन्ग. आई वाज लाइक, सी आई मीन मैं भी बच्चा हूँ इन द एंड, मेरे को भी पसंद है जूते लेना, कपड़े लेना. इट्स अ थिंग. आई गेट एक्साइटेड अबाउट बाइंग क्लोथ्स, बाइंग शूज. बट एक फर्क होता है ना कि तुम अपने लाइफ के लिए कुछ प्लानिंग करते हो, उसके बाद मस्ती करते हो. सो दिस इज व्हेन आई वाज लाइक, ये ऐसे क्यों सोच रहे लोग, मेरी एज के लोग. मतलब why is it that I am thinking about my future and investing money, and why is it that they are not? So what can I do to fix that? Which is why I started making content in finance. So that's how it started. Very interesting, bro, because I'll tell you why. See, सबसे पहला ना, I just सुनने से मुझे लग रहा है कि एक तो I think you're very fortunate. See, क्योंकि I think yeah, वो नहीं होते, क्योंकि एक तो यार पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हो ना, तो I think yeah. half the battle is one. 100%. एंड वो पेरेंट्स का अप्रोच बड़ा बढ़िया था कि हम डोनेशन देने जा रहे हैं, जहाँ के जिस कॉलेज में जाना है उतना मिलाओ, जहाँ जाना है चले जाओ. So that was very cool. And बात इकोनॉमिक्स की ना, I also agree, because there's a very किसका quote है कि an economist is the most useless person in the room. Yeah, 100%. But the thing is, 100%. all the social sciences ना, an economist वो बता सकता है पास्ट में ये क्यों हुआ, और उसमें भी one can have different opinions on different biases. अब इंटरेस्टेड लोग, या किसी का उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, किसी का नेगेटिव है, अब दोनों सही हैं. करेक्ट. राइट. बट एन इकोनॉमिस्ट कैन नेवर टेल यू कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. एग्जैक्टली. सो हाँ, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट ऑन यू आल्सो.
तो एक और चीज, अब जैसे अब यू गोइंग फॉर सीएफए, ठीक है, अभी कंटेंट क्रिएशन भी Correct. अब a lot of people are confused with CFA and अब Aditya is a CFA, right? Yeah. अब when he did it, तो his intention was कि यार this was one thing जो stock market से relation है, और उसको उसने Yeah. curriculum पढ़ा, he loved it, ठीक है, तो he Yeah. just Yeah. went through it. So and a lot of people आजकल CFA बहुत ज़्यादा fancy में आ गया, बहुत ज़्यादा fancy में आ गया. So Yeah. why are you doing CFA? और according to you, who should pursue this degree? अगर कोई confused है, so, according to you, who is the person who should be Correct. So go for this? So the reason I am doing CFA is because, as I told you, I had watched Aditya's video, right? And he mentioned that it's the most complete course when it comes to the stock market. And ये मेरे एक teacher ने भी कहा था, as in there's a professor called Dr. Mark Meldrum. He's a Canadian professor, very popular in the CFA community, and he puts out a lot of CFA related content. So I had watched his entire playlist for level 1, wherein he said, look, the CFA exam is not at all like the questions that you see there. If we as college professors put those questions in college exams, the university will fire us. That is how easy those questions are, individual questions. What's difficult is the depth of that course. वो कोर्स स्टॉक मार्केट के बारे में आपको एक साथ इतना सारा इंफॉर्मेशन दे देता है कि टेकिंग इन ऑल दैट इंफॉर्मेशन, कनेक्टिंग इट टुगेदर एंड राइटिंग दैट एग्जाम इज द डिफिकल्ट टास्क. The questions aren't difficult. The questions are very elementary. So, and it's not just what Aditya said, what everyone said. Like people are like, if you like the stock market, if you like finance, this is the most complete course. Like it focuses solely on finance. It won't talk about a lot of other things like an MBA might or CA might, but it will tell you everything you need to know through those 3 levels. So I was like, okay, that's perfect, because I'm not interested in taxation as such. Although it does talk a lot about taxation. I'm not interested in that field as such. Accounting also not really. And so when it comes to this field, इतना depth बहुत like सही था. And rather मैंने अब तक सिर्फ मैंने level 1 किया है, और उसने भी मेरे practical approach में इतना value add किया है. Like there are so many things. Aditya, I think learned a lot. और जिसने told रतन मुझे बहुत सिखाया CF से is ethics. जो CFA में 100%. ethical conduct है ना, I think that is something जो किसी भी program में ना सुना है, it's unheard of, and it is I think one of the best things कि एक professionals को बताया जा रहा है कि you have to stay strong to the ethics. Yeah. That is the core of CFA. So who would you recommend this to? बहुत लोग हैं जो confused हैं कि ये CA करें, CFA करें. What would be your one advice to them? Yeah. So India में ऐसा when people just discover the stock market ना, एक ऐसा होता है कि मुझे ना स्टॉक मार्केट करना है. सो यू डोंट रियली नो व्हाट यू वांट टू डू देयर, बट इट्स लाइक मुझे स्टॉक मार्केट करना है. ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं. 16-17 साल के बच्चे होते हैं जिनका डीएम आता है कि भाई मुझे ना भैया स्टॉक मार्केट करना है, तो मैं क्या करूँ. आई एम लाइक, सो इट्स देयर इज सो मच यू कैन डू देयर, राइट? लाइक सो मच. And it's not just in India. You can also go to some other countries where there are so many different opportunities that aren't in India yet. India currently, India is one country where people will never pay someone for advice. India में वो concept ही नहीं है कि हम किसी को पैसे दे रहे advice के. So, but बाकी countries में है. So that's one aspect you can do. You can manage people's money. You can work at a mutual fund. You can work in investment banking. You can work in credit analysis. Broker, you can be full-time broker, PMS, there advisory. is so much. मतलब there's so much. Actually, you're right. क्योंकि ये बहुत common concern, I think सबके लिए होता है. जहाँ लोग बोलते हैं कि इसमें stock market में passion है. Right? So saying that you want to make a career in stock markets is like saying that you want to make a career in sports. आपको sportsman बनना है, आपको stadium खोलना है, आपको sports team चलाना है, आपको sports equipment बेचना है. मतलब आपको athlete बनना है. कितना कुछ है. Exactly. करना क्या है? तो stock marketing career doesn't only mean that you have to be an investor and trader. You can do parallel things. Exactly. Totally so. Completely agree. So जिनको ऐसा लगता है कि मुझे स्टॉक मार्केट करना है, so it's like for those people, like अगर आपको वो है कि this is one field you're very interested in, then consider that course. जाके पढ़ो उसमें क्या है. अगर वो 10 subjects में से even if 7 interest you, there's a good chance you'll pass the exam. And ethics ka, as you said, it's to 100%. Like, I can't believe it. I wrote an exam that has 8% mathematics and 15% ethics. And I'm like, मतलब ये क्या हो रहा है? Like ऐसा मैंने पहले बार देखा है कि मेरे को इस बात पे ज्यादा emphasis है कि मैं एक situation में कैसे behave करूंगा as compared to whether or not I'm able to value a stock or calculate cash flows and stuff like that. And I feel that that's actually very good, especially India में तो बहुत जरूरत है उसकी. With all the scams and all that keep happening. एक मेरा podcast हुआ था with शंकर शर्मा में, तो उनका भी यही था. तो उन्होंने ये तो very clearly said कि मैं पैसे चार्ज करता हूँ सही एडवाइस देने के.
क्योंकि honesty is a very expensive thing. Ethics is a very Yeah, expensive thing which you cannot 100%, expect from 100%. cheap people. Yeah, वो एक definitely CFA का बहुत strong tangent है. So yeah, I yeah, think yeah. for people जो आप बोलना चाह रहे हो who want to maybe are interested in pursuing stock market as a career, Yeah. CFA would be a good option for them, right? Hmm. Nice man. So what's your goal of CFA? मतलब are you planning to do a job या फिर you want to continue your journey towards content creation? Where do you see yourself in 5-10 So years? Yes, honestly, I wouldn't mind working a job for a few years to basically see how processes work when it comes to a big corporation, right? Like, so जब एक business बहुत बड़े scale पे काम करता है, चीजें अलग होती है. मतलब छोटा धंधा चलाने से वो बहुत अलग होता है, right? And so I would do it for that. But the ultimate goal is I want to do my CFA to, number one, gain more credibility as a creator. That's definitely going to be there, because see, content creation is something that I don't really feel like I want to stop doing. That's something I want to continue doing. And secondly, एक और चीज है कि maybe in the future at some point I would like to have something of my own, and I feel like the experience I would get, like the experience I would get after getting my CFA charter at maybe a good financial services company or whatever, would be very valuable in that as well. So it's primarily those things. But in the end, I don't see myself working a job in the long run. So you might want to go for it for just for experience, but you want to start something of content creation, something that you feel. Yeah. You Yes, like it. absolutely. Abna, just say you're a Gen Z content creator, right? And I remember Correct. the first time I just randomly saw your content, and I think उस समय you were in your very early days. ठीक है, बहुत, correct me if I'm wrong, बहुत early days में थे आप. And I just texted you कि Instagram पे कि bro, I love your content. It is just fantastic. Okay. Yeah. You've come a really long way. I think your content is genuinely fab. So tell us about. Thank you, man. Thank you. क्योंकि बहुत लोग हैं कि जो content create करना चाहते हैं. Tell us about your Correct. creation process. मतलब how do you start researching? How do you choose? I want to talk on this, or take us through that. Two things, okay, about content creation is, number one is reading. आप news पढ़ते हो, business stories पढ़ते हो, articles पढ़ते हो, books पढ़ते हो कोई, और वहां से आपको बहुत आइडियाज मिलते हैं. मतलब मैंने वॉरेन बफेट वे करके एक बुक है, आई स्टिल हैवंट फिनिश्ड इट, आई हैव टू फिनिश, एंड आई हैव रेड अराउंड the first 3 chapters that I read, I got like 7-8 content ideas there, things about investing. Yeah, so it's like people underestimate reading for content creation. You read and you'll get some or the other thing there. Well, it's बहुत मिलता है. मतलब दूसरी चीज होती है कंजम्पशन. अभी मतलब इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग लाइफस्टाइल रील्स और वाचिंग मीम्स, इंस्टेड गो फॉलो सम वैल्यू क्रिएटर्स हु आर गिविंग वैल्यू. पॉडकास्ट सुनो, वैल्यू वाला कंटेंट देखो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो. और इन द एंड अच्छा कंटेंट तब आता है जब आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम भी करो. अच्छा कंटेंट कंज्यूम करोगे तो फिर आपको भी अच्छा इंस्पिरेशन आएगा टू मेक गुड थिंग्स. एंड द बिगेस्ट फिलोसफी दैट आई follow as a creator is relevance वाला स्टैंड पॉइंट इज दैट मैं आज अगर कोई चीज बना रहा हूँ तो 4 साल बाद भी रेलेवेंट होनी चाहिए. मतलब फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं इन्वेस्टिंग के बारे में कोई चीज बताता हूँ, देयर इज अ हाई चांस 4 साल बाद भी वो कांस्टेंट रहेगी, रेलेवेंट रहेगी, एज अपोज टू से अ सॉन्ग दैट ट्रेंड्स एंड यू डांस ऑन इट and it has no meaning, right? 1 month later it's gone. So instead of riding on trends, instead of looking for that momentum वाला engagement, स्लो गेम खेलो, रेलेवेंट रहने पे फोकस करो, बिकॉज वैसे आपको लॉन्ग टर्म का ये रहेगा. बिकॉज सी इन द एंड it's not like a point A to point B sprint. It's a big process that you have to keep doing, right, over and over. Keep churning, keep creating. So marathon वाला approach रखोगे तो I feel like the reading and consuming, that's the only. Agree. ये काफी interesting point है वैसे, think for everyone okay, who is thinking of creating content, is that reading and consuming, of course, क्योंकि वो that's the main thing. I think बहुत लोग अपने I think पहले editing पे और अच्छे कैमरा पे फोकस करते हैं, which I don't think is required. I think you are. I got a good camera after I was at 12K. I got a good camera after I was at 12K. Before that I had a very bad camera. Your content is just like pure content. उसमें ज़्यादा editing वेटिंग नहीं होती, बस मैं I think you'll put some things here or there. And I started it now. Content. Yeah, I started a little visual treatment nowadays because I got that feedback. People said keep make it a bit more visually appealing. थोड़ा graphic डालो. So I started that now. But yeah, I mean that's how it's supposed to be, right? वो orange hoodie का idea कैसा है? वो orange hoodie is something that I love. That is like iconic. Okay.
So I started wearing the first video I made was in that hoodie. It was a coincidence. Like I didn't intend on wearing it. I wore it in the first day and I was like, okay, great. On the same day, I read that story. Like Mark Zuckerberg wears the same T-shirt everywhere. Steve Jobs used to wear the same T-shirt, and I was like, I'll also do the same thing. Like now, so एक तो डाल दिया ना वीडियो ऑरेंज में, तो अब वही कंटिन्यू करूंगा, वही पहनूंगा. Or you won't believe, I'll tell you this. I'll tell you how I got it. Now people think, okay, where do you get it? People ask me, where do you buy it? It's such a vibrant color. Now I had gotten this hoodie when I was in ninth grade, and at the time it was super oversized, and I got it from a factory outlet for like 400 rupees or something. Yeah, Wow. that is the hoodie I wear. Yeah, it's What happens if that hoodie needs to replace a wear and tear हो गया what time, so how you find a new one? there's a hoodie that Wildcraft makes in the same color. I have my eyes on that. I'll buy that as backup. That's the plan. But it's great so far, touch wood. उसपे एक भी hole नहीं है. It's like probably lasted me the longest from all my clothes. नहीं bro, it must be something. Yeah, destiny, I guess. I don't know. हाँ, कुछ मतलब when you must be buying it, कुछ होगा कि this is something. Probably. तो काफी cool है. And वो color, you're right, that is so vibrant, bro. मतलब it's vibrant. Now I stop कि जब मुझे लगता है कि अच्छा ये कल आ गया, इसका मतलब आदित्य. Correct. तो ठीक है. So your कहते हैं your research part जो आपने बोला, if you want to be a content creator, which I completely agree, is that you need to consume good content. ठीक है. और लोग बहुत बार बोलते हैं कि content नहीं मिल रहा, क्या post करें, which I think is मतलब मुझे समझ गया था, बिकॉज इतना सारा कंटेंट है, एक टॉपिक पढ़ोगे उसमें इतने सारे टॉपिक से कंफ्यूजन ये है कि इतना सब कवर कैसे करें, और मतलब how do you manage to cover all this, इतना सारा कंटेंट है. So that I completely agree. So I think all the content creators, you can check this out. अब I want to talk about your investing style. ठीक है. Now clearly like you mentioned कि you don't check your portfolio much. अभी recently war के चक्कर में check your portfolio, right? Correct. So since how long have you been investing? Since 2020 start, like no, 2019 end, I think. Yeah, by the end of 2019. And I remember 2019 में जो demonetization ILF इसका पूरा चल रहा था कि जिसमें small caps and the mid caps were coming down and the large caps were doing very very well. उस समय पूरा था. NBFCs were outperformers. ठीक है. तो तब से what was your investment philosophy when you entered the market? So what is it now? What's the difference? I'll tell you something very honestly. My start was like full trial and error. Like ये देखते क्या होता है लेके, ये देखते करके क्या होता है. No idea whatsoever. And by the time I was in my final year, towards the end, that's when it started developing. This is like 2020, slightly after the lockdown, when the crash has happened. The crash was the full panic for me. I was like, I don't know what to do. Should I buy? Should I sell? I had no clue whatsoever. And I didn't even have money at that time. So I was holding, I think, I was holding Cipla. I was holding Deepak Nitrite. Deepak Nitrite still haven't sold. And I don't recall, man. Honestly, not a lot of stocks I have held on to from that time now. I did have a couple of mutual funds. कैसे किए थे? Just by randomly. Deepak Nitrite was not random, however. So Deepak Nitrite was when मैंने उस टाइम पे PE ratio सीखा था और इन्वेस्टोपीडिया पे. बोला अच्छा ये कोई चीज है, अब देखते इसका PE ratio का क्या होता है. फिर मैंने मनी कंट्रोल पे देखा उसका PE ratio, एंड आई वाज लाइक ओके, इसका तो PE ratio बहुत कम है एंड डेट तो है ही नहीं. सो आई वाज लाइक तो ये लेके देखते क्या होता है. एंड सो दैट वाज अ फ्लूक. बट ओवर टाइम व्हेन आई like this is when 2021 I read their annual report. I made a lot of money on that stock, but then in 2021 I read their annual report and I was like, okay, on to great things. So this is, I mean, I would still buy it. So I bought more in 2021 and I've been holding ever since. But so us time pe like 2019 2020 was all flukes. Like whatever money I made was fluke, whatever money I lost was guesswork. But after that in 2021 the style became heavily like, right now it's a lot value oriented. Like I care about valuations a lot. As in, the only mistake I made, I would say, was Nykaa, because I mean it's not really in losses, but I was like, अरे चलो IPO इतना hype पे लेके देखते. Emotionally मैंने ले लिया. मतलब you applied for the IPO? Yeah. I did. I got the lot. And but then I was like, okay, this was a emotional decision. But other than that, it's like it's very value oriented. Like I pay attention to valuation a lot. Like if it's मेरे को लगता है ओवर पे हो रहा है तो फिर मैं नहीं लूंगा.
I'll be like, okay, kabhi aur. No, explain valuation. Yeah. मतलब how do you value and Hmm. मतलब what is your process कि you might say कि अच्छा यार ये company तो ये share overvalued. Correct, correct. Take me through that process. I feel like relative valuation is reliable. You can compare. You can see कि industry के साथ कैसा ये कर रहा है, which is it's not a bad way to do it. It's okay. But ठीक है. now again, one more thing I learned from Mark Meldrum is that he says discounted cash flow is the most reliable. He is like if you're looking for intrinsic valuation and if you do it, मतलब बोल रहे हैं, if तुम सिर्फ उस कंपनी के earnings को मन में रख के उसके मार्केट शेयर को देख के कुछ डिसीजन ले रहे हो, तो दैट्स लाइक गोइंग टू गिव यू मोस्ट रिलायबल रिजल्ट्स, बिकॉज नाउ वो कैसा, इट विल गिव यू, यू विल बी कंजर्वेटिव देयर बट इट विल गिव यू मोर रिलायबल रिजल्ट. सो आई यूज intrinsic value wala models mostly, like either dividend discount or free cash flow to equity, something like that. And this is one hack I've spoken about. If you want to usually like find, like if there are people who haven't learned these things and if they want to figure out के क्या बोलते हैं ना, intrinsic valuation कहाँ से निकाल सकते हैं, so there is this website called Simply Wall Street which gives you a free trial. You can use a क्या बोलते हैं ना, टेम्पररी ईमेल होता है ना जो डिस्ट्रॉय हो जाता है एक महीने में, वो करके इन्फिनिट फ्री ट्रायल ले सकते हो. एंड दे गिव यू फ्री डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स एंड फ्री कैश फ्लो इक्विटी मॉडल्स फॉर एवरी स्टॉक. So if you haven't learned that, if you don't, or if you're simply lazy to do it yourself, you can use their models. It's great. So I mean, this is something I'm telling for the viewers. Yeah, मतलब आप भी वो use करते हो? I used to, and then after CFA and all happened, I started doing a little khud se. Then I learned from Ashwath Damodaran's course. He puts his entire module from his university on YouTube for free. So मैं वहाँ से भी कुछ सीखा. And it's like I feel like now so I read Intelligent Investor, and like 40% of that book was like genius, makes so much sense. The rest 60% I was like, okay, this is not for me, not my generation, that kind of a thing. And but वो जो 40% था, what were the parts? What were those parts that you felt? A lot of those parts, a lot of that book is very conservative, right? And those things I didn't like, as in certain, especially like certain, वो जो time था when it was written, that was a time where the US markets were like on an average returning 7-8% a year. So it was written with that and उस टाइम पे bonds के भी rates अलग ही थे. उस हिसाब से I couldn't relate to it as much. I have read around 75% of that book. I haven't finished it. But मैं एक साथ में multiple books पढ़ता हूँ. I don't have that कि ये खत्म करके दूसरे पढ़ना. Same. तो मेरा मूड इसका मूड है तो ये पढ़ेंगे वैसा. Yes, same. Yes. I can't, ऐसा मेरा साथ भी होता है कि I can't just take one book और मैं उसको खत्म, नहीं ऐसा नहीं है. हाँ, 100%. मेरी वो अच्छा क्या वो उठा लिया, मूड आज ये कर रहा है तो ये उठा लिया, और ऐसे exactly चलती रहती सारी बुक्स. Yeah. But the thing I resonated the most from that book, and then मैं Warren Buffett वे पढ़ा, उसमें Warren, so that is fantastic book. Okay, Warren Buffett वे उसमें case study है Warren Buffett के investments की, और हर जगह लिखा है कि उन्होंने ये क्यों की, उनका क्या thought process था, how does he think when he does all this. So margin of safety कि अगर कंपनी आइडियली होनी चाहिए 1000 करोड़ की पर तुमको 600 में मिल रही है तो सही है, मतलब हो रहा है सही वो, और जब वो गैप क्लोज होगा सॉर्टेड है. बट अब उसमें भी एक होता है कि नॉट नेसेसरी, अगर 1000 करोड़ की कंपनी है आइडियली और तुमको 600 में मिल रही है, नॉट नेसेसरीली इट्स अ ग्रेट कंपनी, मे बी वो गैप क्लोज हो जाएगा आगे जाके, बट व्हाट इफ इट्स एन एवरेज कंपनी. तो वो फैक्टर, लाइक वन थिंग दैट हैड this valuation game had worked for me was BCG, Brightcom Group. I had bought Brightcom Group when it was selling for I think 28 rupees a share. And at that time, the company is making like 600 crores in net profit and market cap was like less than 2500. And I was like, okay, there's a, इससे मतलब ये जो business है इनका मीडिया बिजनेस, उसमें तो और कितना हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है बाकी कंपनीज, तो why not this? And they have no debt, they are, you know, doing so well. And then I bought those shares and that was a winner for me. So I pay attention to valuation a lot. I would say that is like my, I mean, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता कि मैं small caps ज़्यादा ले रहा हूँ या कुछ. In fact, I like buying small caps because over time that's what's going to give you the returns, right? So I invest aggressively, but I focus on valuation a lot. Yeah, interesting. See, but no, I think this is one thing that people can learn. एक तो to find intrinsic value, there are several ways, right? तो a lot of people, I think, एक बार सोचेंगे मुझे intrinsic value बताओ तो मैं कैलकुलेट करके ठक ठक करके बता दूंगा इसकी intrinsic value. ऐसा होता नहीं है. हाँ, exactly.
there are quantitative factors, there are qualitative And factors. it's also what you think. It's also Exactly. so It much what depends you on. think. Yeah, हाँ, जैसे कि अब suppose somebody is a lawyer और ये judgment आ गया कि lawyers को tax benefit मिलेगा, तो for you and me, we won't care because it's exactly, not affecting exactly. us. But for a lawyer or somebody who has that professional in his family, उसके Correct. लिए वो बहुत matter कर जाएगा. तो you're right, biasness भी पूरा है. तो I think one thing a lot of people ask this, how to find the intrinsic value, is that जैसे DCF model हो गया, ठीक है, cash flow models हो गए, बहुत सारे models हैं, and you need to find what works for you because you will need to take that effort to Correct. explore और देखना पड़ेगा कि क्या है, इससे कोई shortcut नहीं है. Would you agree to that? Yeah, 100%, 100%. एंड कैसा ना हर मॉडल काम करेगा ऐसा भी नहीं होता. लाइक अभी फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू अप्लाई, यू आर लाइक ओके, आप बैठते हो, सीखते हो डिविडेंड डिस्काउंट क्या होता है और बोलते हो मैं मुझे ये शेयर पसंद है, मैं ये लेने वाला हूँ, चलो उस पर अप्लाई करते हैं. वो व्हाट इफ दैट शेयर डजंट पे डिविडेंड, सो नाउ यू हैव टू वर्क अराउंड इट, राइट? You have to maybe go to free cash flow to equity, or if it's an asset heavy business, you have to probably use an asset model. It depends. So Of course, कितने सारे in a factors होते business हैं. like Zomato or Ola Uber, Yeah. you cannot use price to book value. It will not Yeah. make any sense. Not at all. Not at all. So Yeah. you're right. वो तो hit and trial से ही आता है. And I guess there's no shortcut to it. Yeah. मैं बताऊँ, one thing I really found interesting in you, man. मतलब I entered stock market in 2010. ठीक है? Okay. So I didn't go to college. तो जैसे मैं 18 हुआ, I came to market. अब मेरा क्या बना, I had a journey क्या था कि मुझे लगा कि भाई पहले 6 महीने तो आई थॉट कि भाई मैं आ गया हूँ, मैं बादशाह हूँ. अब किसी को आइडिया भी नहीं कि मैं आ गया हूँ और मैं तो हेलीकॉप्टर, और जेन्युइनली आई एम टेलिंग, उस समय मतलब स्टॉक ब्रोकर ऑफिस तो मेरा तो था कि भाई हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, गार्ड मुझे ध्यान रखेगा कि कौन जा रहा है, हाउ स्टूपिड पीपल आर. तो सेम 6-7 महीने में लेवल पे आ गए. रियलिटी चेक. आई रिमेंबर रियलिटी चेक पूरा अच्छे से मिल चुका है कि there's a lot of other things that meets that. उसके बाद आई अगेन फ्यूचर ऑप्शंस, और फिर उसमें आई बर्न्ड माय हैंड्स, और फिर करके आई रियलाइज किया ठीक है, एंड आई केम इनटू द इन्वेस्टिंग जर्नी की बैलेंस मेंटेन करना है, जो अगेन जो सबके साथ होता है. बट इन योर केस दिस वाजंट योर जर्नी. व्हाट आई एम हियरिंग टिल नाउ कि you directly jumped into investments, you skipped out all that part की कि ट्रेडिंग करके या फिर फ्यूचर ऑप्शन में हाथ जला, ऐसा कुछ नहीं. you directly came to this. नहीं, थोड़ा हुआ है, बहुत थोड़ा, बट नॉट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. सो आई टेल यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग. आज तक ना एक लॉट फ्यूचर खरीदा है, ना ऑप्शन, नथिंग. आई डोंट, माय एंटायर द ट्रेड लिस्ट. या भाई फ्यूचर ऑप्शन, दैट्स इट. आई वांट टू. मैंने ट्रेड कर रहा था. फर्स्ट आई मेड सम मनी लाइक 500 रुपीस. Second day did it 300 rupees. Third day did it again 400 rupees. Fourth day I lost what I had made in the last 3 days. I'm like, okay, it doesn't make sense, doesn't add up, right? Then again I traded one day, made 500 rupees. Next day lost 600. So I was like, ये तो मैं luck पे कर रहा हूँ. And then I spoke to a trader who was super experienced, and he said, okay, bro, look, it's more about emotion. So if you're not emotionally controlled, you're not going to be able to do it. Because you can still control emotions in investing better. Because if you अगर ऊपर नीचे हो रहा है तुमको, तो just बंद कर दो phone. You can't do that in a trade, right? So it was like, so you have to first start controlling your emotion. To which I realized, man, this is not for me. Because मेरा कैसा था, I'm an emotional person. There are things I value a lot, and I sometimes especially when it comes to losing money, I can't remain calm. So for that reason, I was like, hey, this is not for me. So why do it? Instead, so let's just invest. Let's, simply focus. Trading is a way to make money, right? So why not just, investing is like giving your money to someone who's making your money. Like you're just buying shares of a company, and that company is making money on your behalf. Yeah. It's like you're hiring that CEO. अच्छा कर रहा है. Exactly. So it's like वो पैसा बनाने दो, हम आराम करेंगे, हम कुछ और करेंगे वैसा. So this emotional aspect is what made me go like, okay, that's not for me. Maybe I need more discipline before I start that or whatever, but that's not for me. But for that reason, I never tried futures and option. Even if I was like, okay, ये तो होना ही है for sure, कर लेते हैं, try quick money. I'm like, nah, doesn't make sense. Very interesting. I'll tell you why. क्योंकि एक तो see, you're 21, right? Yeah. और इस age में there's a very famous thing कि at 21 na we don't even generally mom dad kare क्यों call karo, okay bye. You want to pick up your friends calls. Emotional intelligence strikes
आफ्टर 26 27 व्हेन और जनरली देखा जाता है कि बहुत लोग उसके बाद उस एज के बाद दे वांट टू हैंग आउट मोर विद देयर पेरेंट्स रादर देन देयर फ्रेंड्स. ठीक है, तो एक वो भी होता है, बट यू रियलाइज दिस वेरी अर्ली एंड टू रियलाइज दिस एंड टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये मेरी वीकनेस है, मैं नहीं करता, एंड एक्चुअली दिस इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस की यू रियलाइज दिस एंड दिस वाज स्मार्ट मैन. सो हाउ वुड यू एडवाइस, अब जो बहुत लोग जो ट्रेड कर ही जा रहे हैं और नुकसान पर नुकसान आ ही जा रहा है, ठीक है, सबने नॉर्मलाइज कर दिया है कैपिटल लूज करना है, तुम सीख रहे हो, सीख के आदमी आधा जल के खत्म हो गया, बट उसी प्रोसेस में. सो हाउ वुड यू, व्हाट वुड यू एडवाइस टू दैट पर्सन कि हाउ टू फिगर आउट इफ कैन यू, इज ट्रेडिंग इज फॉर यू और नॉट? If you get bothered by what people tell you, if okay, this is a stupid example but it's funny. So अगर आपकी बंदी ने रिप्लाई नहीं किया इसके लिए आप बार बार व्हाट्सएप चेक करते हो, या अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आप घर जाके वो चीज ओवरथिंक करते हो सोच के कि यार इसने मुझे ऐसा क्या बोला, उसका टोन सही था या नहीं, व्हाट डिड दैट पर्सन मीन, देन ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू. Like if all these aspects you tick, then it's not for you. दिल्ली के लड़के ऐसे लाइक ट्रेडिंग हम नहीं कर रहे आपसे, हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे आपसे. So it's like because it's emotion man, it's that's what it is. And मेरा कैसा है ना, अगर मेरा पैसा जा रहा है और वो वापस नहीं आ रहा है तो मेरी फटती है, तो आई एम लाइक हाँ तो ये में नहीं है मेरे लिए. इन्वेस्टिंग में कैसा है, अभी वो शॉर्ट टर्म लॉस रहेगा वो कर लेंगे, बाद में ऊपर आ जाएगा जब. Because see, when you invest, you've done so much research. You're like, okay, I picked 15 stocks. Even if 10 work out, it's fantastic. And you know it. Like this is the one up on Wall Street. मैं बोलेगा on Wall Street, out of 15, you just need 7 to be right. That 7 is all it takes to make that एकदम enviable record. Okay, everyone is like, oh, ये क्या कर दिया इसने, मतलब legendary, that sort of a thing, right? So if you're picking 15, and even if you do like 8-9 correct, you're happy. So bro, 8 is also too much. Even if you're getting 30% correct, you are in the top 20% investors of the world. Yeah. And if you're even striking 40% rate, which is extremely high, so बहुत मतलब yeah, you're in the top 20%. So this is actually very cool and inspiring. ठीक है, so yeah, हम लोग बहुत इतना डिबेट कर गए. Coming back, ठीक है, when you invested in 2019, ठीक है, to now, how has your investment decision changed? How do you think you have changed, and what have you learned as an investor? Okay, number one, I've learned that you are human, you will make mistakes 100%. So इसके लिए ना कुछ पैसे, मतलब उस टाइम पे ऐसा रहता था कि नहीं मैं म्यूचुअल फंड में नहीं डालूंगा, फीस देनी पड़ती है, मैं क्यों दूं उनको फीस, ऐसा एक अप्रोच था कि मैं व्हाई शुड आई गिव. एंड उस टाइम पे कैसा था, फीस वर अ लिटिल एक्सपेंसिव आल्सो, 1.5%. नाउ इट्स बिकम ऑल 0.5 0.4, इंडेक्स फंड्स के तो 0.2 से भी नीचे. सो उस टाइम पे ऐसा था कि मैं क्यों दूं. बट कैसा है, आप ह्यूमन हो, आप नए हो, आप गलती कर सकते हो. बट कुछ लोग हैं जो 20 साल से यही कर रहे हैं, तो मतलब वो भी गलती कर सकते हैं, लेकिन उनके चांस कम है ना गलती करने से आपके. तो कुछ पैसे उनके पास रहने दो. अगर तुम एक सेट कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो तो मे बी स्टॉक्स में पर्सनली मैनेज करने की 30% ऑफ दैट, do whatever you want, make as many mistakes as you want, but the remaining say 70% or 60% let the professionals handle, because we are inexperienced. Like say the average 20-year-old, उसने क्या ही मार्केट देखा. मैं खुद बोलूं मैंने क्या ही मार्केट देखा है अब तक. I have seen one crash, that too not properly. I was still a student at that time. I was scared. I was like, I didn't have a lot of money, didn't know what to do. And maybe like now if I see a crash, my behavior will be different. जैसा अब रशिया वाला हुआ था तब बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया कि यार क्या करना चाहिए, सही है या नहीं. And but then I was like, okay, it's still a buy. आगे 10 साल के सोचेंगे. और I bought. तो it's like this is like one experience I had. कितने ऐसे लोग हैं जो 20 साल 25 साल से मार्केट में है, जो all these experienced fund manager है, they've seen like 7-8 crashes. So उनको ज्यादा पता है, कुछ पैसा उनके पास रहने दो. That has been the biggest change. कि like I've become more human, where I've realized कि हाँ मैं भी गलती कर सकता हूँ और 100% करूंगा आगे भी जाके. So इसके लिए मेरी गलती का इफेक्ट मेरे पैसों पे इतना नहीं पड़े, इसके लिए कुछ पैसे उनके पास रखो वैसे. वेरी इंटरेस्टिंग. और एक और चीज जो हम लोग सीख सकते हैं इज दैट allowing yourself that you can make a mistake and you're not a superhuman. ठीक है, वो चीज को I think this was something जो मैं अपने आप से I think मैं अपने आप को बहुत करता था in my early 20s. तो मुझे होता था कि यार नहीं, I have a point to prove, मैं कॉलेज नहीं गया हूँ, तो मुझे होता था मैंने गलती कैसे कर दी. I used to be very hard on myself, and I see same honestly same कि हाँ, and it never pans out to be well. ठीक है, you go in a very negative space और बिल्कुल भी दिमाग कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो उससे बेटर है कि accept you're human, you can make mistakes, and also diversify. मतलब थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स में भी डाल दो so that कि you 100% 100%. Correct.
right? And one more thing is that there are two types of Indians. Number one is like FD, सब safe money, बाकी सब जुआ है stock market. दूसरा होता है जो average 20-year-old came into stock market and he's like just shitting on FD all the time, shitting on bonds. He's like ऐसा मतलब will I do with 7%? What will I do with 8%? Which is true. You are not aiming to put your money in FD and getting rich, but that is stability ना. अगर तुमने मेहनत की 10 साल और तुमने 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाया, पूरा स्टॉक्स में रखा, और कल को मार्केट अगर क्रैश हो गया एंड तुम्हारे 1 करोड़ की वैल्यू मतलब 60 लाख 70 लाख हो जाती है, जो हो सकती है, होती है कितने लोगों की, Easily. तो तुम क्या करोगे? तुम क्या निकालोगे? अगर तुमको जरूरत पड़ती है उस पैसे की, Bro, कैश चाहिए, क्या निकालोगे? एक Gen Z investors का ये इतना बड़ा या मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ. अब I don't know. स्टेबिलिटी चाहिए ना. हाँ नहीं exactly. एक तो overconfidence. What I feel in my perspective कि a lot of 100%. Gen Z investors have like too much overconfidence. ठीक है? Yeah. ये सबसे पहली चीज, I think Gen Z investors are very lucky because when I started markets, I never had a barrage of information on sources to learn. Yeah. कुछ सीन था ही नहीं. ठीक है, तो वो lucky है. But एक you're right, ये perception बन गया कि FD बकवास है. उसका अपना need है. Right? हाँ. So if there's a 65-year-old guy, I will not tell him कि ये sir आप equity में डाल दो. नहीं, उसको risk लेने की जरूरत नहीं है. 7% बहुत, उसका inflation beat रहा है, बहुत है. मतलब 4-5% जितना भी FD मिल रहा है अभी. So हाँ, एक तो वो है. So why do you think this is, man? क्योंकि एक तो this Gen Z investors में एक है, and I see कि बहुत बार not only मैं कितने क्रिएटर्स देखता हूँ, जब कोई आएगा ना हेट कमेंट पे, तेरे को ये नहीं आता, मैं तो ये कर चुका हूँ, इतना कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा. 99% चांसेस आर कि he is a Gen Z investor. Yeah. So what do you find one thing concerning? मतलब one thing which is you think it's very inspiring about Gen Z investors, and one thing यार I wish this could be better in Gen Z investors. What would that be? Gen Z really thinks that like last year was easy money for everyone. So Gen Z thinks it's going to be like that forever. That's the biggest concerning thing. And when it doesn't, I think वो ये होना, because see, and वो भी होता है ना, अभी अब समझो आपने ओवर कॉन्फिडेंस में डाल दिया सारा पैसा स्टॉक्स में, कल को मार्केट क्रैश होता है, यू आर स्टिल अनबॉदर्ड, यू आर यंग, यू आर लाइक 23-24, you're like क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो लॉन्ग टर्म में, बट इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. तो तब क्या कौन से पैसे यूज करोगे खरीदने? फुली इन्वेस्टेड हो तो भी क्या, कहाँ से? This is when your bonds help you, ना? Exactly. People don't understand the बहुत लोग उसको opportunity. This is where your bonds will help you. Bonds में अगर 1 लाख रुपए डाल के रखा है, निकालो, खरीद लो shares. So वो मतलब एक ऐसा ना, I would say that safer investments are underrated in this time for Gen Z. The adults still need to get a hold of the stock market and realize that wealth is there and not keep putting it all in FD. But for Gen Z, polarized है. बड़े जो हैं हमारे वो सब FD में डाल रहे हैं, और बच्चे जो पूरा ही मतलब स्टॉक में डाल रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए कुछ नहीं रखते. So I feel like थोड़ा दोनों तरफ पे थोड़ा acceptance होना चाहिए for the other side. Yeah, it's a bubble burst because I think it's a very interesting. There's a massive imbalance. Yeah. One side of spectrum was FD में घुसे हुए, FD PPFs क्या? Exactly. On the other side of spectrum, again, it's the complete opposite end. और दोनों extremes are not good. Yeah. And one thing you find really inspiring, कि यार मजा आ गया Gen Z investors देख के. Everyone is really thinking about their future and focused on building something for themselves and not spending. A lot of them are like that. Like a lot of them are like, you know what, मैं यहाँ पैसे बचाऊंगा ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं ये चीज नहीं खरीदूंगा ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ. I feel like that's fantastic. Bro, this is so cool because I'll tell you, जब 2012-13 में हमारे आता, ठीक है, so COVID obviously was not there. तो उस समय clubbing was really in. I don't know यार, Gen Z ने कभी clubbing. I haven't been to a club ever. Bro, you are the luckiest not once. person at that. Yeah. It's the most useless, for me, I can say. It's such a... You can't even talk to that other guy, bro. उसको जोक भी नहीं crack कर सकते because he will not even understand. This music is so loud. And उस समय ये था कि everyone, कि जो दिल्ली मुंबई का सीन था, that कि यार भाई ये क्लब आ गया, I have to go there. You have to Saturday night, if you're not out, you're the lamest person out there. Okay, उस समय actually था. And I know so many people who used to just go clubbing. And my age, I'm talking millennials, talking about क्यों, just to prove कि भाई हम cool हैं, ठीक है, हमें भी अंग्रेजी गाने आते हैं, हम भी cool हैं. But now Gen Z is like complete. I don't think Gen Z को कुछ इससे फर्क पड़ता है. It's all about growth and 100%. And secondly, ना मेरे को एक और, I feel like one more thing Gen Z needs to realize is it's okay to, मतलब लोगों को क्या लगता है पता, लेबलिंग तो इतना होता है. अब तुम कुछ चीज खरीदते हो तो लोग बोलेंगे तुम मटीरियलिस्टिक हो, और तुम नहीं खरीदते हो तो लोग बोलेंगे तुम कंजूस हो. बट ऐसा जरूरी नहीं है. अगर if you buy something to show off, then you are materialistic.
But you buy it because you want to buy it. You like, say you buy a slightly expensive shirt once in a while and तुम्हें पसंद है पहनना, तो कुछ गलत नहीं है यार उसमें. मतलब this is one thing I hate about Gen Z. मेरा एक ये थॉट है कि when you want to buy something, ठीक है, and the first thought in your mind is कि यार what will my cousins think, कि जब मुझे था कि जब मैं बड़ी गाड़ी लूंगा तो यार मेरे मामा क्या सोचेंगे, what my चाचा think, what my friends think, dude. So that is the point. You should not buy it because you're buying it for other people. Exactly. So that is one thing. Don't buy to impress someone. हाँ, exactly. और एक और चीज मुझे जेंजी में ना, बट there's one thing which I really sympathize with the Gen Z word, कि यार हमारी इसमें क्या होता था कि अगर तुम 25 साल से कम हो तो तुम ठीक है चिल मारो, मतलब there's no society pressure कि you know what are you, दिखाओ क्या हो तुम. बट अब तो ऐसा हो गया कि even 18-16 year old, and rightfully so, because यार 16-17 साल के बच्चे इंटरनेट में मचा सकते हैं, मतलब they have the capacity, मचा रहे हैं, like बचा रहे हैं actually, like they can, इतना एक तो कॉम्पिटिटिव आ जाता है कि यार आई एम 20, उस बंदे ने ये कर दिया वो कर दिया, आई एम स्टिल सिटिंग, मैं नहीं कर रहा हूँ. एंड दैट क्रिएट्स, आई थिंक, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कितना स्कैरी सिचुएशन हो सकता है फॉर जेन ज़ी, यार कुछ हो कि नहीं रहा, कि कुछ हो, जैसे आई से you're 21, you're doing great. A lot of other 21s who are not in a situation, they're doing way better, but there are people, that's what I'm telling you, there are people who, so I have some friends who are doing such insane things that I talk to them and my day is ruined. I'm like, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरे से छोटे हैं. So वो एंड वही चीज है ना, कंपैरिजन का वो तो प्रॉब्लम है कि अगर फॉर एग्जांपल यू हर्ष गोयला, इफ आई डोंट वांट द सेम थिंग्स एज यू डू, देन व्हाई शुड आई कंपेयर माई सेल्फ विद यू फॉर द थिंग्स यू हैव. अगर हमारे वांट्स ही अलग है तो हमारे पास जो है उसके लिए क्यों कंपेयर करना. तो वो मैं हमेशा अपने आप को बताता हूँ एवरी टाइम आई फील दैट, एंड आई फील लाइक बाकियों के लिए वो होना चाहिए, बिकॉज वो बोलता है ना ऐसा, मतलब कोट हर जगह आता है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय. वो गलत ही नहीं है, बहुत सही है. वो compare, वो Gen Z का horrible thing का, they compare a lot, and I say that because even I do. So what would you recommend to a lot, क्योंकि जैसे मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं, उनका सबका ये कंसर्न रहता है, and I feel so bad for them because I know कि उनको जो कंपैरिजन का फीलिंग है वो इतना गंदा में नहीं था. Luckily I was lucky कि मुझे वो ऐसा ज्यादा कभी नहीं हुआ. What would you advise them? Same thing कि understand what do you same want. Thing, yeah, that's तो 100%. Second thing what I tell myself is, see, Gen Z has this approach is that मैं 25 साल के पहले सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरी मौत है, हो गया, खत्म, जिंदगी खत्म हो गई, आगे कुछ. सो ऐसा नहीं है. नाउ assume you don't do anything for till you are 30, you just sleep till you are 30, and you decide at 30 you will start, like theoretically, don't do it, but theoretically, if say your life is paused and you start from 30, fast forward हो जाता है, फिर भी तुम्हारे पास 30 और साल है रिटायरमेंट से पहले, और 20 और साल है बिफोर यू आर फिजिकली अनेबल टू डू इट. So there is so much time you have. Matlab, if you're 20 now, even if you start a business at 40, you have a good 10 years to make it work. And the time from today till you are 40 is your day zero to till now. Like इतना सारा time जो तुम अब तक जिए हो, वो तुम और एक बार जी सकते हो, और एक बार जी सकते हो, और एक बार जी सकते हो, 3 बार till you're 80. So इतना सारा टाइम है तुम्हारे पास. So वो रियलाइज करो, उस टाइम को कंटेक्चुअलाइज करो कि तुम्हारे पास इतना सारा है, तो इतना प्रेशर मत डालो अपने आप पे, काम करो, फोकस करो, क्या करना है फिगर आउट करो, धीरे धीरे धीरे. दैट्स व्हाट आई इवन टेल माय सेल्फ, बिकॉज़ एवरी टाइम आई एम लाइक, ये तो ऐसे चीज कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ. आई एम लाइक, एंड दिस इज, सी, मेरे लास्ट 1 साल में मेरे लाइफ में, पर्सनालिटी में, माइंडसेट में इतना ग्रोथ हुआ, तो फिर 5 साल क्या चीज है. तो मैं अपने आप को किसी ऐसे बंदे से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ जो मेरे से 5 साल उम्र में बड़ा है. सो आई गेट देयर लाइक दैट. Like I have time. That's what I tell myself. And see, I think everyone would be lying if they say कि यार I don't feel competitive or envy. वो तो बड़ा natural human है, but human instinct है. But I think you're right. You need to keep telling this to yourself at some point of time, just to कि you're human. ये होता है. Stick to your path. Okay. So Aditya, last question. Bolo. What is that one thing in stock markets that you believe, but generally everyone else disagrees with you? What would be that one thing? I think this one, evaluations matter a lot. Like many people don't agree with that. Like many people think अरे ऊपर जा रहा ले लेते हैं. अगर मैं बोलूँ अरे भाई उसका अर्निंग्स तो 200 times है, वैल्यू इतना तो है ही नहीं धंधे का वैल्यू, तो क्यों, अरे नहीं पर जा रहा है ले लेंगे. So just because there is momentum, just because price is going up doesn't make it a good investment for the next 10 years. Like this is something I spoke about in my video also. You look at Jubilant Foodworks, which is a company that has so many real stores, so many real franchisees, and they have such a great product, right? Domino's का इतना brand loyalty है, मतलब जो एक बंदा, तो it's the top, हाँ. और it's like Domino's में उसके ऐप के थ्रू उनका बेटर ऑफर्स है, तो उन्होंने स्विगी जोमेटो के कंपटीशन को भी
ये किया था, मतलब चकमा दिया था बोल सकते हैं, बट वो करके भी उनका जो वैल्यू है, बिजनेस का वैल्यू है, वो जोमेटो से कम है। और जोमेटो क्या करता है, बस फूड डिलीवरी का दलाल है बस। इट्स लाइक अ मिडिल मैन हु इज लाइक कि हाँ हम तुम्हारा डिलीवरी लेके पहुंचेंगे, 30 रुपए मारेंगे बीच में बस। तो और तो व्हाट बिजनेस डज जोमेटो हैव बीइंग more valuable than Domino's? I don't know if it's still true because I haven't tracked the price, but there was a time when Zomato was way more valuable than Domino's, almost twice. So Hmm. it's like that's what I don't get. Like you have to pay attention to what you are paying for that business and what it should be valued. मतलब it's simple यार, तुम जाके फैशन स्ट्रीट पे अगर जाते हो मुंबई में, जहाँ पे बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, मतलब if you've been, you'll know. So fashion street is like a place where you'll get clothes for 100 rupees, Is it 150 something like rupees. दिल्ली का सरोजिनी नगर ऐसा कुछ? Yeah, yes, Got it, yes. got it, So got it. हाँ. you go to fashion street, you'll not pay 5,000 rupees for a t-shirt, right? You won't do that. So why do you do that in the stock market? Like if you were to do it at fashion street, why would you do it in the stock market? That's what, like, I feel like that's something I believe in, and a lot of people disagree with me. Makes a lot of sense. It makes a lot of sense. Or to be honest, even I will Yeah, have to check if Zomato was over, मतलब, had a higher valuation than Jubilant it Food. did, it did, it did. It's crazy. It's completely Yeah. insane. And you So right. I feel, see, it was above 1 lakh crore for some time. I don't know if now it's not. I feel after the Russia ka thing, अभी तो it I was think above 1 lakh Jubilant crore. Foods have really It's come down. ना, Zomato 70, तो खत्म ही 80 हो गया. jubilant at the time. Yeah. हाँ. So तो ठीक है. This is very interesting. yeah, What is your current take on the markets? Do you think the markets at this level, Russia-Ukraine war पूरा चल रहा है, and yeah, abhi in the past couple of days, I think they've had one of the worst attacks. Russia has done the most severe yeah, attacks, yeah. right? And negotiations are going on, but it doesn't seem that it will end very soon in the near future. lag nahi raha, at least till now, till we are recording. हाँ. What is your take on the markets from the valuation point of view? Do you think पैसे it's fairly है तो valued? एसआईपी करो, क्या होता है? पैसे है तो एसआईपी करो, नहीं है तो चिल मारो बैठो, क्योंकि अगले 10 साल में तो होगा ना कभी फिक्स. और लाइक यू जस्ट सी S&P 500 लास्ट 100 years और सेंसेक्स लास्ट 100 years, जब भी कोई मेजर हिस्टोरिक इवेंट आया है ऊपर तो गया ही ना. मतलब आज लास्ट 50 में मेजर हिस्टोरिक इवेंट से भी ऊपर ना, तो चिल हो जाएगा ठीक. अभी आज नहीं, मतलब वी शुडंट रियली बी थिंकिंग कि अगले 1 साल में क्या होगा. वी शुड थिंक दैट इफ वी नीड द मनी, अगर हमको लगता है कि अगले साल में इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो सब चीजें सोचनी चाहिए. बट आई फील लाइक जो बंदा रिसर्च करता है, स्मार्टली डिसीजन लेता है, उसने उसके लिए प्रोविजन बना के रखे. उसको अगले 1 साल में जो पैसों की जरूरत है, उसने वो क्या लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में रखी है, जो फिक्स्ड इनकम है शायद, या एफडी टाइप्स. सो दैट पर्सन तो हैज नथिंग टू वरी. बट इट्स लाइक इफ यू हैव द मनी, keep doing an SIP consistently so that averaging keeps happening. If you don't have the money and you have a portfolio, then don't look at it chill. Give it time. So I can see you have a complete investor mindset, and you're right. Okay, Yeah. thinking that point of view, it is Okay, you tell me one thing. If there is a war going on and you are just told that, hey, here's 10 lakh rupees, you can spend it wherever you want. Just don't buy things. Invest it. You will invest it, right? You won't just keep it lying around. You will. Yeah. At least 70 to 80% of it. इसमें So, anyone will do even a simple thing ना, कि वर्ल्ड अकाउंट की डेट्स देख के एक बार उसको S&P 500 में डाउ जोन्स पहले मिल जाएगा, उसे मार्क कर लो, वो भी दिख जाएगा कि मार्केट ऊपर ही गया उसके बाद. exactly. So यार it's ये like, तो एक फैक्ट है ना, इट्स हो जाएगा ठीक कुछ ना. एंड सी इट्स लाइक अगर वॉर रिजॉल्व हो गया तो मार्केट ऊपर जाएगा. वॉर रिजॉल्व नहीं हो गया, वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या मार्केट ही नहीं बचेगा, फिर क्या है, कुछ है ही नहीं आगे. सो या मतलब मुझे क्या लगता है इसका, मार्केट्स मूव एंड इकोनॉमिक्स फॉलो. ठीक है. अब अगेन दिस इज समथिंग दैट लॉट ऑफ पीपल डोंट एग्री विद मी व्हेन आई से, ठीक है, मार्केट्स मूव इकोनॉमिक्स फॉलो. क्यों? इकोनॉमी में हमेशा प्रोज कॉन्स रहते ही हैं. ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा कि सिर्फ प्रोज हैं, कोई कुछ कौन है नहीं, या सिर्फ कौन है, कभी नहीं हुआ. 2014 when the markets were going up, ठीक है, उस समय यूरोप में क्रैश थी, मार्केट्स ऊपर जाते कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैड कम, तो सबने लगा कि देखो दुनिया बदल जाएगी, चेंज जाएगी. 2020-21 या पूरे 2 साल निकल गए, सब ये बोलते गए कि मार्केट्स ओवरवैल्यूड है, इकोनॉमी इज नॉट मैचिंग, एंड द मार्केट्स वेंट अप एंड द इकोनॉमी वाज एट द डायरेक्शन. तो आई फील कि ये ट्रेंडिंग, जब मार्केट्स ऊपर जाते हैं ना, तो सब क्या बात करते हैं, एवरीवन फॉरगेट्स द कॉन्स, सिर्फ प्रोस की बात करते हैं. कैसे प्रोस की बात करेंगे कि डिमांड बढ़ रही है, ऑनलाइन में ये हो रहा है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यूएसए ट्रेड बेटर हो गया. और जब मार्केट्स गिर रहा है तो सिर्फ नेगेटिव चीजें,
से वॉर की बातें करते रहेंगे. Correct. Yeah. Because economists have no other option. मतलब you Yeah. can't even blame them. वो भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है, तो उनको हाँ. तो बोलना पड़ेगा. I So agree with you. they will keep pointing the things Yeah. that are negative in the economy. So markets Hmm. move, reasons follow. So Yeah, I yeah. so believe in And this. see, so there was this module in CFA का level 1 economics का है, जिसके last part में, I think second last chapter में कहीं तो था, where they said they spoke about recognition lag, action lag, and impact lag. Okay, there's a problem. So it takes the government some time to recognize that problem. By the time it's intensified a little, then it takes the government some time to allocate some money and spend it to fix that problem. That's the action lag. So action लेने में थोड़ा time लगता है. फिर आता है impact lag, कि अब तुमने जो पैसे खर्च किए हैं उसका जिन अफेक्टेड कम्युनिटीज पे या लोगों पे ये सब प्रॉब्लम्स हुए उन तक पहुंचने का जो टाइम लगता है, इम्पैक्ट लैग. सो आई एज अ जोक व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू माय फ्रेंड, आई टोल्ड हिम देयर इज लाइक दिस होल recognition lag, action lag, and impact lag, and there is one more, that is economist lag, that after all this happened the economist say हाँ ये problem था. So this is, and we had a great laugh on it, and I so that's what I said, I agree with you. It's like correct, markets move and economists follow. वो तो है. Again, ये podcast is not to hate on economists. This is just our view. I think expect anyone, बताओ लोग economics expect करते हैं कि वो बताएगा future. अरे भाई वो भगवान थोड़ी जो future बता देगा. So nobody can tell the future. अरे वो जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन भी इतने गलत देता है, सो फ्यूचर क्या बताए. तो हाँ. And people, so I sometimes what happened is certain videos I make and I ask Andy to the question, I'm like, what do you think is this is like, this is stupid, what do you think about this? So people say कि so आप कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिक्स से ज्यादा जानते हैं, तो I say कि मैं नहीं भाई, ज्यादातर लोग जानते हैं, no offense, but it's like most things that are common sense that you can just simply use that common sense to debate with them and you'll still win. But people don't understand that. That's like India में अभी भी हम डिग्रीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, डिग्रीज, एजुकेशन, फॉर्मल एग्जाम. या बताओ, मुझे लगता है कि अगर हाँ आई नो ऐसे कमेंट्स आते हैं एंड आई फील कि वो बंदा ना खुद ही मार्केट में बहुत नया है, क्योंकि कोई भी जो आदमी थोड़ा एक्सपीरियंस है ना वो कभी ऐसी बातें कर ही नहीं सकता. बिकॉज इट्स लाइक अगर कोई बिल्डिंग गिर गई तो मैं बोलूंगा कि ये देखो यार सरिया ठीक नहीं था, द सॉइल वाज नॉट गुड, द कंस्ट्रक्शन नॉट प्रॉपर, ठीक है. कैन आई टेल कि फ्यूचर में कोई और बिल्डिंग गिरेगी कहीं और? आई डोंट. दिस इज व्हाट इकोनॉमिस्ट कैन डू. ही कैन ओनली टेल यू पास्ट में ये क्यों हुआ, पास्ट क्या था, दैट्स इट. He can never forecast the future, and correct. बहुत कम है. That is, I think, one thing that all of us should stop expecting anyone to have the answers in future में क्या होने वाला है. Aditya bro, we talked about you. We talked about what are you studying, the content creation, stock markets, valuation. We talked a lot of things. I had a blast talking to you. I hope. Same here, man. Same here. 100%. Thank you so much for having me. Thank you so much for coming. And guys, definitely check out thank you, Instagram. He makes fantastic content. Look out for the orange hoodie. काफी cool है वो. Okay. Thank you so much. Thank you so much, man. Great being here. Bye bye.